What you can do on AlgoTest is we have a product called Signals, and you can completely automate your indicator based strategies. So like if you have any indicator based strategy, maybe the indicator is EMA, maybe the indicator is RSI, or maybe super trend, you can automate it. And another thing you can do for the automation is that even using some charts like Heikin-Ashi's, Renko, you can also use all of those charts to create alerts, to create signals of buy and sell, and whenever that signal comes on TradingView, we will take the trade on AlgoTest. What I gonna do is, first of all, I gonna explain the strategy I gonna demonstrate today, and this is completely demonstration. We are just demonstrating how you can do it, and we're gonna provide you the template of the strategy and the template of the indicator itself, and you can automate your AlgoTest account. So let's just go on TradingView. I'm gonna open the Bank Nifty chart. We got Bank Nifty chart. Let's open it. Remove the old indicators. So there's a Bank Nifty chart with 5-minute time frame. What we're gonna do is we're gonna go over there on the candles. I'm gonna select the Heikin-Ashi. The chart is actually Heikin-Ashi. Next thing we're gonna do is, like, I have provided you 2 links in the description itself. The first link, it is a Heikin-Ashi with EMA indicator code, a Pine script of it, and the other one is Heikin-Ashi with EMA strategy. What we're gonna do, we are not only gonna demonstrate how you can automate it, but we also gonna explain how you can backtest it. So आप backtest भी कर सकते हैं TradingView के ऊपर, and साथ में आप completely automate भी कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसको एक बार ही copy कर लेते हैं. I have copied it. We're gonna go back on the charts, and on the TradingView you will see this Pine editor. So we have to click on this Pine editor once and remove whatever is already here and just paste it. So first we're gonna backtest the strategy. Once we backtest the strategy, then we're gonna automate it using AlgoTest. I took the strategy code. There are 2 different codes. One is for the strategy as it is written, and the other one is indicator. So I have copied the strategy code. I clicked on the Pine editor. I have pasted the code, and after pasting the code, you have to click on save. Then I have named it as Heikin-Ashi Strategy. Let's save it once, and once it is saved, you can see that here it will write the name of the strategy. Because it's a strategy, we can actually backtest it. I'm gonna go over to strategy tester. Click on the strategy tester. Click on a load your strategy, and in the strategy you can see that there are some pre-built strategies which you can also test. We're gonna go to my scripts, and there are a lot in my case, but I guess in your case there will be few. So I just clicked on Heikin-Ashi Strategy, and this is the strategy backtested. So according to the rules, it has backtested it, and then we can also automate it. So the rules we have in this strategy, I'm gonna just present it to you. So we are using Heikin-Ashi candles in this strategy. With Heikin-Ashi candles, for if we are going on long, what we're gonna do is that current candle close is greater than previous candle close. So right now I'm telling you about the long part of the strategy, जहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमारी जो strategy है, जो हमारी underlying है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है. So the strategy logic for going long is that close will be greater than previous close. It should be a green candle. That means that close is greater than open, and the close is greater than the EMA. So we also have a EMA. If current close is greater than previous close, it is a green candle, and the current close is greater than the EMA value, then we will take the long trade. And for the short one, what we're gonna do is, if current close is less than previous close, then it is a red candle, and close is less than the EMA value. If these 3 conditions met, then we take the short entry. And we also gonna apply some SLN targets on the basis of percentages to this. If we go to strategy tester,
this is the result it is showing with the default inputs. What you can do is you can like click on the settings. तो settings पे मैंने click करा है and यहाँ पे आपकी EMA लेंथ के अंदर आप अपने हिसाब से अपनी लेंथ को चेंज कर सकते हैं. लेट्स से कि आपको EMA 9 नहीं चाहिए, आपको EMA 15 चाहिए, तो आप EMA 15 के हिसाब से इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं. तो अब ये EMA 15 के हिसाब से आपका बैक टेस्ट हो जाएगा. अगर आपको चाहिए कि जो मेरी एंट्री हो रही है वो 9:15 से लेके मैंने अभी बाय डिफॉल्ट 3:15 डाल रखा है, you can also change the timings. Let's say you only want to take the entry trade between 9:15 to 1 o'clock. Like you can play with the input parameters and you can figure it out for yourself what are the best parameter according to you. So instead of 15 I can also write 15-20. In the stop loss percentages and target percentages, it is 0.25 for underlying. We can also use 0.025, or I can write 0.01 stop loss, and with target of 0.025 I can click on this and we can backtest it. That's how we're gonna do it. Let's figure out a strategy. We can also see on the charts here. So input, let's change something. Let's change it to 9. Stop loss back to 20. Target to let's say 0.5 of the underlying. So these are the trades we're gonna take. So अगर मैंने यहाँ पे एक short trade ली होती, तो यहाँ पे अभी उसका चल ही रहा होता, then यहाँ पे मेरे को एक long trade मिल गई, यहाँ पे मेरे को एक long trade एक और मिली, जो यहाँ पे आप खत्म हो गई थी. So if we backtest using the current parameters, it is showing us the net profit to be 33,000 and drawdown is around 700 points. You can also like check the list of trades that whenever you got any good points in it. So this was the backtesting part where we backtested the strategy. What I'm gonna do right now is we're gonna start a live trade of it, like how you can actually automate everything. So this is a basic template. You can play with the input parameters, you can play it for yourself. And now I'm gonna go to the other script. तो इस वाली script के अंदर आपके पास indicator है. I've copied. Again I will click on this fine editor. जो पुराना कोड है आपने एक बारी सेव कर लिया Heikin-Ashi strategy से, तो इसको मैं एक बार डिलीट करके दोबारा से सेव कर लेता हूँ. या फिर मैं यहाँ पे एक बारी ओपन करता हूँ, न्यू इंडिकेटर पे क्लिक कर रहा हूँ एंड ये वाला कोड जो मैंने अभी वहाँ से पेस्ट कॉपी करा था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. लास्ट की 2 लाइन है, ये मैं हटा देता हूँ. मेरे को सिर्फ ये अलर्ट कंडीशन तक की लाइन चाहिए एंड इसको हम कर लेते हैं एक बारी सेव. स्ट्रेटेजी जो पहले थी आपके वो हटा देते हैं. सेव करा एंड सेव करके यहाँ पे Heikin-Ashi with EM में आ गया. इट मीन्स इट्स सेव्ड. लेट्स क्लिक ऑन ऐड टू चार्ट्स एंड चार्ट्स में आपका आ गया. सो लेट्स चेंज द पैरामीटर जो हमने अभी सेलेक्ट करे थे. 15-20, स्टॉप लॉस 0.2, टारगेट 0.5. तो यहाँ पे आपकी ये स्ट्रेटजी, ये इंडिकेटर आ गया. अब AlgoTest को आपको कनेक्ट कैसे करना है इनके साथ, एक बार वो देखते हैं. AlgoTest के अगर आप पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन का बटन मिलेगा. अगर आप पहले से ही आपका अकाउंट है तो आप सीधा लॉगिन कर लीजिए. अगर नहीं है तो आप साइन अप के अंदर आ सकते हैं. एंड साइन अप के लिए हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक भी दे रखा है. अगर आप उस लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे ऑन एवरी परचेज. So if you join using that link, you will get 25% extra credits on each purchase. So I'm gonna just log in with my account. We have to go to the signals. So signals में जाना है and I'm gonna take the live trade. So I will just click on this, create your signal. We're gonna take the signal from TradingView. TradingView से आपका signal आ रहा है तो TradingView से click करा. Live deployment हमें करनी है. Live deployment स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं आप पुरानी प्री डिफाइन भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको न्यू क्रिएट करनी है तो न्यू क्रिएट कर लेते हैं. तो इंडेक्स मेरा बैंक निफ्टी है. एंट्री टाइम 9:20 डाल लेता हूँ. एग्जिट टाइम 15:25 लेट्स से. आई एम गोना बाय अ कॉल एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं कुछ छोटी हम ले लेता हूँ.
let's say OTM 10 एड लक। तो मैंने एक कॉल की स्ट्रेटजी बना दी, बाय कॉल की। इसको हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। CE बाय रन, स्ट्रेटजी मेरी आ गई। लेट्स से NNML ऑर्डर, लिमिट टाइप, लिमिट बफर ऑफ 3 पॉइंट्स, सेटअप सेटिंग्स, अलर्ट नेम CE बाय दिस। तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा एक ये जेसन ब्लॉक कॉपी करने के लिए। अब ये जेसन ब्लॉक जाके हमने जो उनसे ट्रेडिंग व्यू है उसके अलर्ट बनाने हैं एंड वहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट करना है। तो एक बारी मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो आई कॉपीड दिस, गो बैक टू ट्रेडिंग व्यू, क्रिएट अलर्ट्स। अलर्ट्स के अंदर जाके हमने सिलेक्ट कर लिया Heikin-Ashi विद EMA, एंड लॉन्ग एंट्री जब भी आएगी तो मेरा ये वाला अलर्ट रेज हो जाएगा वंस पर बार क्लोज, क्योंकि सब कुछ हम बार क्लोज पे ही कर रहे हैं। अब जो मैंने यहाँ पे मैसेज कॉपी करा था AlgoTest के ऊपर, कॉपी जेसन ब्लॉक से, ये वाला मैसेज, ये मुझे यहाँ पे मैसेज के अंदर पेस्ट करना है ऑन ट्रेडिंग व्यू। इट्स पेस्टेड। आई कैन नेम इट समथिंग Heikin-Ashi CE by CE entry, लेट्स से। एक बार वापस AlgoTest पे जाना है, क्लिक ऑन आई हैव पेस्टेड। एंट्री वेबबुक URL को मैंने कॉपी करा, वापस आया मैं ट्रेडिंग व्यू पे। नोटिफिकेशन के अंदर जाके आपका वेबबुक URL यहाँ पे होगा। अगर आपने कभी वेबबुक नहीं बनाया तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एंड आप यहाँ पे वेबबुक URL कॉपी कर सकते हैं। तो जो हमने वहां से वेबबुक URL कॉपी करा उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड क्रिएट। तो यहाँ पे मेरा एंट्री का अलर्ट क्रिएट हो गया ऑन 5 मिनट कैंडल फ्रेम। देन ऐड एग्जिट अलर्ट, कि हमें सब कुछ ऑटोमेटेड चाहिए, तो एंट्री एग्जिट एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। तो एग्जिट का नाम दे दिया मैंने CE एग्जिट, सेव करा। जेसन ब्लॉक को मैंने कॉपी करना है, वापस से ट्रेडिंग व्यू पे गए, ट्रेडिंग व्यू पे अब न्यू अलर्ट क्रिएट करा। सो बेसिकली हुआ क्या कि Heikin-Ashi जब मेरे को लॉन्ग एंट्री दे रहा है तो हम एंट्री ले लेंगे, जब लॉन्ग एग्जिट देगा तो हम उसको एग्जिट ले लेंगे। तो वंस पर बार क्लोज चेक करो, जो मैसेज है उसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं Heikin-Ashi CE exit या long exit. Go back to AlgoTest, click on I have pasted, copy this exit webhook URL, copy it, go back to notification, in the webhook URL remove the old one and create, click on create. So now we have two CE entry and CE exits, and I'm going to just start listening. तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करते हैं, लाइव ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ब्रोकर मेरा IFL पहले से कनेक्टेड था, तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे कोई भी सिग्नल आता है ट्रेडिंग व्यू से कॉल बाय का, तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मुझे मान लीजिए कि किसी टाइम पे इसको पोज करना है, बी आई जस्ट वांट, बिकॉज मार्केट इज क्वाइट स्टेबल टुडे, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस पोज सिग्नल। सो अगर पोज सिग्नल हो जाता है तो आपकी स्ट्रेटजी पोज हो जाएगी, एंड अगर कोई भी उस टाइम पे सिग्नल आता है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो आई गोना अगेन स्टार्ट लिसनिंग, ताकि लिसन करना स्टार्ट हो जाए। अगर आपका एक बार ही ऐसा पूरा सेटअप क्रिएट हो जाता है, देन आपको दोबारा से इसको सेटअप की कोई जरूरत नहीं है। हर दिन आपको आना है, अपने ब्रोकर से लॉगिन करना है ऑन AlgoTest, एंड एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। तो ये हमने कॉल बाय के लिए कर लिया। लेट्स डू द सेम थिंग फॉर पुट बाय whenever the short entry and exit comes. So I'm gonna just quickly do it. So we're going to choose trading view, live deployment, not this one, create new strategy, bank nifty, entry time to be 20, 25, buy put. I'm again selecting OTM
10 because it's just demonstration. Click on add leg, save and continue. Let's name it something as PE buy. Done. Setup settings, PE entry, save, copy the JSON block, go back to TradingView, click on alerts, Heikin-Ashi. Now this time short entry. The message I copied from there, I'm gonna paste it over here. Heikin-Ashi PE entry. Go back to AlgoTest, click on I have pasted, copy the webbook URL. On the notification tab, go to webbook URL and paste it. Click on create and your PE entry is created. And exit alerts, so it will be PE exit. Click on save. You can custom name the exit alert anything. Click on copy JSON block. Again on alerts, choose Heikin-Ashi, short exit, once per bar close. The message box, paste it, Heikin-Ashi PE exit. Go back to AlgoTest, click on I have pasted, copy the exit webbook URL over here. Paste it, click on create, and now everything is created. I just want to check one thing that I have. So it should be once per bar close. It was earlier on only once, so it should be once per bar close. Click on this save, go back to AlgoTest, start listening, and now both of my signals are created. So you can automate everything. Whichever indicator based strategy you have, whichever chart based strategy you have, you can automate everything. You can also join our Signal Telegram. In the description box you can find the link.